Hello dear student, in this slide we will study the spherical mirror and the various terms which is related to the spherical mirror. So first we define a spherical mirror. So a definition is a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow glass sphere known as a spherical mirror. So now there is a diagram in which the various terms related to a spherical mirror are shown. So we will study one by one the various terms related to the spherical mirror. So first term is a pole. So what is a pole? So as you see in a diagram, there are two diagrams. So in these two diagrams, in a first diagram the outer surface is silver coated, and when you see in a second diagram the inner surface is a silver coated. So in a first diagram the reflecting surface is a inner one is a reflecting surface, and in a second diagram the outer surface is a reflecting surface. Okay, so in first diagram the spherical mirror produced is a concave mirror, and in a second diagram the mirror formed is a convex mirror. So let's first study the various terms related to the spherical mirror. So first term is a pole. So pole is defined as the central point of mirror is called its pole. So as you see the center point, this is the hollow glass sphere, and we are forming a mirror from a part of that hollow sphere surface. So the middle point, the center point of that surface from which we are forming a mirror is called its pole, and we denote a pole by a P, as you can see in a diagram. Now second is the center of curvature. So what is the center of curvature? Center of curvature we denote by a C, and that center of curvature is a center of a hollow sphere from which a mirror is formed. जिस hollow sphere से हम मिरर बना रहे हैं उसका जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे नोट करते हैं? सी से. Okay, now next move to radius of curvature. So radius of curvature we denote by a capital R. जो radius of curvature होती है उसको capital R से बताते हैं, and this radius of curvature is defined as the radius of a hollow glass sphere from which a mirror is formed. जिस hollow glass sphere है जिससे हम mirror बना रहे हैं उसकी जो radius होती है वही हमारा जो mirror है उसकी क्या कहलाती है? radius of curvature. Now next point is principal axis. So what is a principal axis? It is the straight line joining the pole and the center of curvature is called principal axis. So as shown in these diagrams, our center of curvature is denoted by C, the pole is denoted by P. So a line which is joining the center of curvature and a pole, we can extend this line in a both sides, so that is called a principal axis. Now next one is a focal plane. So what is a focal plane? A plane passing through the principal focus and are right angles to the principal axis of a spherical mirror is called focal plane. So to understand a focal plane we also need to understand the what is a principal focus. So further afterwards we will define the principal focus also, so you can more understand this focal plane term afterwards. Okay, now next is a focal length. So what is a focal length? Focal length is the distance between the pole and the focus. So let's once I just define a focus also. What is a focus or a principal focus? When the light rays comes parallel to the principal axis and after reflection they will cut the principal axis at a point. ओके क्या बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आती है, कोई रे आती है, लाइट रे, और पैरेलल आने के बाद जो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर कट करती है, वो जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ मिरर. ओके, सो प्रिंसिपल फोकस पर जो प्लेन बनाएंगे हम, परपेंडिकुलर प्लेन, प्रिंसिपल फोकस पर प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं. और प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द principal focus and a pole is called focal length. Now let's define the next term. Next term is the aperture. So what is a aperture? Aperture is the
सरफेस विच इज़ एक्सपोज्ड फॉर द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसके लिए किसी भी मिरर की जितनी सरफेस ओपन होती है, जितनी सरफेस अवेलेबल होती है जहाँ पर कि वो लाइट आके इंसिडेंट हो सकती है और रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो जो सरफेस होती है वो उसका क्या कहलाता है, एपरेचर कहलाता है। ओके, और ऑल्सो वी कैन डिफाइन अ एपरेचर एज द साइज ऑफ द मिरर। Okay, so now you understand all the terms one again we summarize। a pole क्या होता है, जो मिरर फॉर्म कर रहे हैं, उस मिरर फॉर्म किया जा रहा है उस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस होलो ग्लास स्फीयर से आपने मिरर फॉर्म किया है उसका जो सेंटर होता है वही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, जिस होलो ग्लास स्फीयर से आपने मिरर को फॉर्म किया है उसकी जो रेडियस है वही जो मिरर है हमारे उस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनको जो मिलाने वाली लाइन है उसको अगर दोनों साइड अपन बढ़ा दें तो वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस होता है कि जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर कट करती हैं वो पॉइंट जो होता है उसको प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। प्रिंसिपल फोकस पर जो प्लेन होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसको बोला जाता है फोकल प्लेन। ओके, और जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन अ प्रिंसिपल फोकस एंड अ पोल।